नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू हरितास कॉन्वर्सेशन। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक गेस्ट बैठे हुए हैं, नया चेहरा है। तो यही काम करती हूँ मैं कि जो कम्युनिटी के नए नए चेहरे हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ खास है और जो समुदाय को भी कुछ देना चाहते हैं, उनकी बात पहुंचाए आप तक। हमारे साथ है कीर्तिदास शाह, जो पर्थ बेस्ड सोशल एंड कम्युनिटी वर्कर हैं, लेकिन साथ साथ में ही वो मैट्रिमोनियल सर्विस देती है सप्तपदी। अब आपको बता दें कि ये यहाँ पर क्यों है, बिकॉज अगर आपको याद हो कि हमने एक सीरीज शुरू की है जहां पर हम शादी ब्याह के लेकर जो पूरे एस्पेक्ट्स है, विविध विषय हैं, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। एंड टुडेस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स हाउ टू फाइंड और व्हाट यू नीड टू फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। कीर्तिदा जी, वेलकम टू हरितास कॉन्वर्सेशन। नमस्कार हरिता जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक्स टू व्यूअर्स आज हमें लाइव देखने के लिए। थैंक यू। हाँ, सो कीर्तिदा जी, जब हम एज में होते हैं, जब शादी ब्याह की बात चलती है, तो फिल्मी डायलॉग के उसमें बात करूं तो याद आता है कि कोई राजकुमार आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर मुझे ले जाएगा, या कोई लड़का सोचता है कि वो लड़की होगी जिसको देख के दिल थम जाएगा एंड हवाएं चलने लगेगी। Is it reality or is it's just the expectation? आई थिंक दैट्स जस्ट देयर एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर क्या होता है कि जब लड़का और लड़की जो भी कोई आते हैं ना, तो जब शुरुआत करते हैं तो देयर एक्सपेक्टेशन इज लाइक अप टू हियर कि मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसी ही चाहिए, और जो पिक्चर में कहीं कहीं देखा होगा, मतलब आइडियल टू फिट विद द हाउस, आइडियल टू फिट विद द प्रोफेशन, आइडियल टू फिट विद द वेस्टर्न कल्चर, एंड ऑल्सो it should have an Indian background as well, because my matrimonial website is for Indians only, so Indians all over the world. So that's what the expectations are. जैसे जैसे उनके साल बढ़ते जाते हैं, 2-3 साल के बाद दे कम टू रियलिटी, बोलते हैं ना, धरती पे आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कोई भी चलेगा, let's just start talking. So yeah, I think today we are going to talk about that. Yes. That will be good. यस, सो हम बहुत सारी जगह पर देखते भी हैं और बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले तो बहुत सिंपल था कि लड़का लड़की के परिवार वाले मिलते थे, खानदान देखा जाता था, उनकी सोशल स्टेटस देखी जाती थी। अब समय बहुत बदल चुका है। अब बच्चे या फिर लोग जो युवा हैं वो खुद अपनी तरीके से देखते हैं, खुद क्राइटेरिया है, खुद के एक्सपेक्टेशन है। उसी को मद्देनजर अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरुआत होती है, किस किस तरह से आपने बदलाव देखा है, जो भी चीजें यहाँ पर बदल रही हैं उसको लेकर? So what I can see, the current scenario at the moment is, because I started Saptapati Matrimonial, that's about 7-8 years ago. That time people were reluctant to register with matrimonial because I think लड़का लड़की ऐसा सोचते थे कि यार मैं इतना गया गुमरा हूँ कि मुझे कोई मिलेगा नहीं, तो मुझे मैट्रिमोनियल में रजिस्टर करना पड़ेगा, मैं अपने आप ढूंढ लगा, ऐसा मतलब पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं. And Harita, again, I just wanted to apologize to the viewers and to you as well. My Hindi is not that good. I'm Gujarati background, so my Hindi is like बीच-बीच में छे आता है. So but you can go with Hindi English, that's okay. Okay, yeah. So that was the thing, that people were not registered that time. उनको पता नहीं था कि this way you can get the broader choices and broader experience as well. Parents को भी involve करके आप कर सकते हो. लेकिन I can see after 8 years that now the boys themselves asking their parents to register, which is very surprising. And then you can see the parents' involvement as well as the candidates' involvement, and that's giving the very fruitful results, because parents को लड़की या लड़का चाहिए इंडियन बैकग्राउंड से, जहां से वो बिलोंग करते हैं, और लड़के और लड़की को चाहिए वेस्टर्न कल्चर. सो हियर एट द सप्तपदी मैट्रिमोनियल वी आर ट्राइंग टू डू द फ्यूजन बिटवीन Indian, Western, and trying to get the match perfect for the candidates. Cool. So
हाँ, सो बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। जैसे कि आपने कहा कि आपका फोकस ज्यादातर इंडियन कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड है, लेकिन बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड हैं और हम ये बात कर रहे हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, आप ये बताइए कि एक्सपेक्टेशन में आजकल क्या क्या बात होती है। जैसे कि हम बहुत सारी सीरीज में देखते हैं कि पहले जो टिक 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 होते हैं कि हाईली करियर होना चाहिए, उनके साथ शौक एक दूसरे के मैच होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। एंड देन जब कोई बीच में होता है, जब उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता है, या दे एक्चुअली गो एंड मीट, the criteria gets narrowed down, kind of thing. How do you see, what is the expectation you generally come across from the young people who are in the marriageable age? So at this stage, what I see that a lot of the girls and boys, when they register and when they want to start searching for the life partner, the expectation they have is they should be Indian culture, and also it's like it should be very well fit into Western culture as well. So Indian and Western culture दोनों होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। रियलिटी में देखा जाए तो, और देन दे गो टू मच अबाउट द वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको अपनी ही बिरादरी में उन्हीं के मतलब दे गो इनटू सो नीटी कितनी इतना डिटेल में जानते जाते हैं। We somehow managed to find the partner for them with that same community and same background they have. उसके बाद क्या होता है, compatibility match नहीं करती है। So what that means कि what today's generation want is more the compatibility. Doesn't matter where the girl or the boys are coming from, which community, which language, which state of India. बट वो यहाँ पले बड़े हैं, वो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर में मोल्ड हो चुके हैं अपने आप को। तो कंपैटिबिलिटी देखो, अगर कंपैटिबिलिटी मैटर है, मैच करती है, तो देन एवरीथिंग कैन बी फॉल इन द वन प्लेस। बट अगर वही नहीं मैच कर रहा है तो आप बोलोगे कि आई एम बंगाली, आई वांट बंगाली बॉय ओनली, और वो भी यही सब कास्ट का चाहिए, तो कंपैटिबिलिटी मैटर मैच नहीं करेगी तो नहीं होगा। इसके बजाय आप अपना जो है वो ब्रॉडर रखिए, मतलब अपना फोकस थोड़ा बड़ा कीजिए। then if you have this big focus, then you can fit it very well within your suitable candidates criteria. तो आपकी बात से एक बात और भी I come to know, do you often come across with the issue of this background, caste, their own culture kind of thing? आज भी क्या कहीं ना कहीं वो है कि मुझे इसी कास्ट में या मेरी ही कास्ट में या मेरी ही बिरादरी में मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए, being in Australia? And the second question is कि how about the Indian partners? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में ही सर्च करते हैं या फर्स्ट प्रेफरेंस इज फ्रॉम इंडिया? नो, ज्यादातर जो लड़के लड़कियां होते हैं, they prefer within the same state, and if not within Australia. So they don't want anybody, like they don't prefer anybody from India until and unless they are in a student visa or student like 2-3 साल से यहाँ पे आए हुए हैं, then parents force them to get somebody from India. But my recent experience is like parents push them to get married and get the girls from India, because parents को चाहिए कि जो लड़की उनके घर में आ रही है उनको Indian values होने चाहिए. They don't believe somebody living here, so they force girl or boy to get married from India, girl or boy, that ended up having in divorce. So I have seen in since last year there is 43% increase into breakups. So that's including marriage breakup, engage हुआ है, उसके बाद breakup हुआ है, या शादी breakup हुआ है. Resilient power बहुत कम हो चुका है आजकल लड़के लड़कियां का. So मेरी एक humble request है to all the parents, don't go with the bias. When you start looking for your girl or your boy, give them a freedom to go with the compatibility. उनके साथ उनको पूरी जिंदगी रहना है, तो उनको अपने जैसा उनको चाहिए ढूंढने दो. हाँ, अब इतना क्राइटेरिया रखो कि इंडियन चाहिए, that's it.
बाकी सारा सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, then you will be happy कि उनको जो मिला है दोनों साथ में अच्छे से रह रहे हैं, and they are happy and they are getting married. That's it. Yeah, I somewhat agree to your point, because I have seen the example where the girl wanted to get married to somebody from Indian background, but the parents were so strict that they wanted from the same caste and the same community and the same values or the same cultural practice. And the girl, she couldn't find those kind of that criteria in out of India, especially in Australia. It's very hard to do it. So yeah, your advice is really, really important. If I ask, we spoke about the advices in a way, and we already gave the tips to the boys and the girls what to do. Have the broad mind, go for the compatibility, at least start going and checking the people. Also, you gave advice to the parents, like, not push, have an open mind and have a patience kind of thing. Any of the memorable incidents when you can share your thing, where the persons, they found like, oh, this is the reality and this is my expectation, it come together and we are here happy. Is there any story you can say, or any incidences happened? Yep. So I can share one recent experience with one of the both candidates, where they happily getting married very soon, and they are happy what I suggested, and they followed that. So the thing was that the girl was from Perth and the boy was from Sydney. So when they started looking, so I was like, the girl was like, no, I don't want to go anywhere from Perth. I'm going to settle in Perth. So I don't want to look anybody, not even like Melbourne, Sydney. So, and then she also wanted to just go with her own community. So ऐसे 2-3 साल हम लोगों ने ढूंढा. Then I met her and I said, look, your reality, she is very, very highly qualified. She is a lawyer by profession, I can say, because if she hears, she will be proud of this conversation as well. So she is a lawyer by profession. She is very, very intelligent. So as a lawyer, you know how they argue so much, right? So I think we argue and we talk about that for a long time. I said, like, look, you have a career, I understand, and your career you can pursue anywhere within Australia, and you're good looking, your age is good, and you have no barriers to find a compatible partner. Why don't you open up in a way that no bar of the caste, Indian is fine, but also like start looking interstate as well. And she said, all right, I think about it. Okay, so 3 days later she said, okay, I go with your suggestion and let's see how it goes. So we started chatting. Like, I introduced both of the girl and the boy. The boy is very smart and he's an engineer by profession. So they started talking. Then I think after 6 months later, I heard that the girl said, look, Auntie, I'm moving to Sydney. And I was like, okay, so why? She said, okay, we want to move together. So this is another thing, which this is a scenario, this stage, the boys and girls. So she moved to Sydney to live with him or stay in the one state. So like, they can be in a touch. Yeah, exactly. Because she said कि phone conversation कर करके कितना बात करेंगे, because we haven't met. So जब ये borders वगैरह खुला था, तो she flew to Sydney and she started living there. And recently I just got an invite for their wedding. They're doing it like very simple wedding, but they're getting married. So the whole moral of this is that she actually agreed to look somebody and to find somebody and to start talking to it. So sometime I would say just listen others. उसके parents भी उसको वही बोल रहे थे. And she has a career यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ के जाओगे तो कहीं और काम नहीं मिलेगा. She found a job there, she's settling there, and you never know, maybe in future she might come back to Perth, or they both settle in Melbourne. So I don't think they should keep a barriers. So geography is not the barrier. So far as you have a qualification, you have your own talent, you have your own options open, that's the good thing. Before we end, what if you ever come across with any of the funny expectations, like it is completely
you know, it's not practically possible. Like जैसे कि मेरी एक friend को था कि वो आएगा सफेद घोड़े पर बैठ के और मुझे ले जाएगा. And then when she found her husband now, he bought the the motorbike from the same dealership where she was working. So we used to tease her कि अरे यार वो घोड़े पे आने वाला था लेकिन वो आ गया स्पाइस मोटरबाइक पर तुझे लेने के लिए, kind of thing. What is the most funniest thing you come across? The most funniest things I come across is one of the recent candidate which I had a meeting with few days ago. They, like, I introduced them and they started talking about that cat and dog. The girl was so into showing the cat's photograph to the boy. And I was like, but yeah, so then sometimes it's like you never know what common topic they can come and they start talking, and I can see the involvement of the girl and boy about the cat, just a cat. And I was like, maybe the cat can get them together and they get married. So, because intellectual अभी के बच्चों में intellectual level इतना बढ़ गया है कि you never know कि कौन सा common topic उनको suit करेगा. And what their expectation meet to their expectation कि like when you see in the movies कि वो बोलते हैं ना सिमरन जा तू जी ले अपनी जिंदगी. So something like that. I think वो movie में सारा अच्छा लगता है लेकिन reality is very very different, and especially I think when you are living in a Western culture and trying to still bonded with your Indian culture, so both उसको फ्यूजन ढूंढना और उसको मैच करना अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, that is a challenging itself. So to meet that criteria, I think just open up your expectation, don't keep barriers, and don't give hopes. That's all I can say. That's very good. And I think it's a very compact and the good advice, not only for the marriageable jo youngsters hain, jo Australia mein hain, they are searching and somewhere they were trying to find the answers कि क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि आप अपनी expectation रख देते हो और सामने वाला हंस देता है, तो you don't feel that comfortable, you don't feel that good. And sometimes when you say accept the reality, it sounds so depressing and so frustrating. So that's the barrier. So we are trying to help you here with some of the expert tips, and I think हमने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समाप्त किया है. I thank you very much, कीर्तिदा जी. अगर आपको ये अच्छा लगा है episode, if you have comments, questions, feel free, like, subscribe, follow. YouTube पर हरिता मेहता and Facebook और Insta पर I am Harita. More episodes coming up. Thank you. Bye-bye. Thank you. Namaste.